During the JEE Main mock tests, my scores were showing a decreasing trend, and Anand sir intervened in the right time and made corrections to my daily schedule, which helped me give my best performance on the day of my JEE Mains. Hi guys, this is Sourav here and welcome to another session for electrochemistry. We are discussing electrochemistry in detail on the Vedantu channel of YouTube, and this session is gonna be on the beginning, on the starting foundation of Nernst equation. Last session में हमने galvanic cells के बारे में पढ़ा था, तो galvanic cells को हमने almost half complete किया था, and we will now discuss the rest of it and we'll start with Nernst equation. Hello Amandeep, hello Anupam, hello Sneha, hello Ajay, and it's good to see you guys over here. Let's see what is in store for us today, but before that I'd request you guys to join the Telegram group if you haven't joined, so that you can join the amazing discussions that are happening over there. It's purely academic in nature. And please do like, share and subscribe our channel so as to be updated with all the amazing content that comes up. Okay, so क्या हाल चाल है भाई आप लोगों का, बताइए. हमने लास्ट क्लास में गैल्वेनिक सेल्स हाफ किया था. गैल्वेनिक सेल्स आज हम पूरा खत्म कर देंगे and we will start with the basics of Nernst equation. Okay, we'll start with the basics of Nernst equation. So चलिए, let's start with, I am fine Amandeep. So let's start with what is in store for us today. So आज हम अपना सेशन एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं. The problem is identify the anode and cathode half reactions. देखिए क्वेश्चन देख लीजिए. You're seeing that iron solid 2 Fe3 plus aqueous 3 Fe2 plus aqueous दिया गया है. Anode and cathode half reactions indicate the flow of current and suggest the experimental setup for the reaction. Suggest the experimental setup. अगर मैं इस reaction को एक galvanic cell में observe करना चाहूँ, then how would this reaction look like? If I want to observe this reaction in a galvanic cell, how would it look like? So I'll solve this question for you guys. It's a very simple question but very beautiful one. Let's see, there is iron and it is converting. You can see that both of them are converting into Fe2 plus. Fe is converting into Fe2 plus. Fe3 plus is also converting into Fe2 plus. So if Fe converts into Fe2 plus, can I say that it is undergoing oxidation? And if Fe3 plus converts into Fe2 plus, I can say that it is undergoing reduction. बोल सकते हैं? Shiv, very good. So Fe is converting into Fe2 plus and it is undergoing oxidation. Fe3 plus is converting into Fe2 plus and it is showing reduction. So how would I write the reaction? Reaction will be written like this. Fe solid changes to Fe2 plus, gives out 2 electron. Okay, Fe solid gives out 2 electrons to change into Fe2 plus, which is aqueous. State लिखना important है. The state is very very important. And Fe3 plus is converted into Fe2 plus by taking up 1 electron. Please look carefully. I can write this very very easily. देख सकते हैं? Please tell me. I can write this very very easily. Fe is converting into Fe2 plus and Fe3 plus is getting converted into Fe2 plus. Both of them are getting converted into Fe2 plus. This is oxidation. So can I say what is anode? What is anode where oxidation takes place? What is cathode where reduction takes place? So this will be the anodic reaction and this will be the cathodic reaction. What would the overall reaction look like? Whenever you write overall reaction, electrons का existence हम zero कर देते हैं. Electrons का existence zero मतलब I will add both of them and I will multiply this equation or this equation with a number so that the electrons get cancelled out. Free electrons का existence नहीं होता है, so I'll cancel out the electrons. So I have to multiply it with 2. In that case, this will cancel out, and what will I have?
Fe solid plus 2 Fe3 plus aqueous, that changes into Fe2 plus 2 Fe2 plus, sorry, 3 Fe2 plus aqueous. Okay, it is a disproportionation. No, it's not a disproportionation. If it would had been a disproportionation, then it would have gotten simultaneously oxidized or reduced, the same species. That means maybe iron would have gotten simultaneously oxidized. I can say that Fe2 plus is getting अगर backward देखें तो backward जाने में it will be disproportionation, but not forward. Okay, forward is like comproportionation. If you are being asked that what kind of reaction is this, this is comproportionation. The backward reaction is disproportionation. Okay, it's a special class of reaction where elements in two different oxidation state combine to give an entity in just one oxidation state. अब देख रहे हैं 3 plus 0 के साथ combine करके 2 plus दे रहा है. Okay, so with this idea in mind, we have to think of what would be the design. What would be the design? Now you can see that there is solid and there is aqueous. Okay, this is solid and this is aqueous. So how would I write the half reaction? How would I write the half reaction? I will write the half reaction as Fe solid, Fe2 plus aqueous. Okay, I will write Fe solid, Fe2 plus aqueous because Fe is converting into Fe2 plus. What can I write for this one? What can I write for this one? These two things, Fe3 plus and Fe2 plus, both of them are in the same phase. That means both of them are in aqueous medium. So I cannot put the vertical line. Vertical line will be put only when there is a difference in the state of matter. Like this is solid, this is aqueous, only then I will put a vertical line. But this is aqueous, this is also aqueous. So I will write Fe aqueous, Fe3 plus aqueous, comma Fe2 plus aqueous, and to measure this I will put a electrode platinum. To measure this I will put a electrode which is platinum, because aqueous solution hai, one is we do not have an electrode. So what I will do is I will put a platinum electrode about which the reaction will take place. Okay, so the overall reaction will be this two vertical lines followed by this two vertical lines followed by this. Okay, so if I want to design this slide, if I want to design the cell, then the cell will be designed in this manner. Two chambers, one chamber will be filled with one electrolyte, another chamber filled with another electrolyte, electrode connection is made, and you put a salt bridge. Okay, okay. Now I will put the right labeling over here. So this is the salt bridge. ये हमारा salt bridge है. Salt bridge में हम क्या ले लेते हैं? Let's say we take KNO3. Okay, this is salt bridge. I'll take KNO3. I will take FeNO3 whole twice. FeNO3 whole twice. I can also take FeCl2. I can also take FeSO4. कोई फर्क नहीं पड़ता. Anion के nature पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है. FeNO3 whole twice. This is Fe. This is Fe. This will be platinum, and in the solution I will take FeNO3 whole thrice. Okay, in the solution I will put FeNO3 whole thrice, because FeNO3 whole thrice will have Fe3 plus, which will convert into Fe2 plus about this electrode. Okay, is there priority of selecting two phase differences? Compound priority of selecting? There is no priority. I will always write the one which is reduced followed by oxidized. Ab dekh lo, Fe followed by whatever is the change, I will write it like that.
So change is happening from Fe to Fe2 plus, so I will write it as Fe, vertical line Fe2 plus. Change is happening from Fe3 plus to Fe2 plus, so I will write it as Fe3 plus comma Fe2 plus. Okay, so हम इस तरह से इसको लिखेंगे, Fe को Fe2 प्लस में कन्वर्ट करने के लिए एंड Fe3 प्लस को Fe2 प्लस में कन्वर्ट करना है, तो हम उसको उसी ऑर्डर में लिखते हैं. ओके, सो दिस इज आवर कंस्ट्रक्ट. ये हमारा सेल का कंस्ट्रक्शन हो गया. ठीक है, आई होप दिस इज अंडरस्टूड. यहां पे हमने Fe3 प्लस और Fe2 प्लस अलग अलग नहीं लिया है, यहां पे हमने सिर्फ FeNO3 होल थ्राइस ले लिया है. दैट्स इट. We do not have to worry about anything else. Platinum electrode is taken because both the substances which are involved in the reaction are aqueous, and I cannot have an aqueous electrode. I need to have a metal electrode. Aqueous electrode नहीं ले सकते हैं, we have to take a metal electrode. ठीक है, चलिए. So let's talk about how efficient we. Okay, Shiv has asked a very beautiful question. Why I use platinum? So I need to use a electrode which is inert, जो कि solution में जो electrolyte है उससे react ना करे. So I can choose graphite as well. I can choose platinum. कुछ भी ले सकते हैं. Okay, so absolutely anything which does not react with the electrolyte. Okay, so platinum is considered to be you can say inert, very inert. So platinum को standard मान के हम लोग वो electrode लेते हैं जो कि react नहीं करे, platinum ले लिया जाता है. Okay, so now let's talk about what is the meaning of efficiency of a gold. भी ले लो, gold ले लो, कुछ भी नहीं, लेकिन बात ये है कि gold is not you can take gold, you can take, if gold is not gonna react with the electrolyte, कुछ भी ले सकते हो. Okay, सत्यम will get to that. Okay, पहले हम बात करते हैं what is the meaning of efficiency of a galvanic cell. अगर आपको मैंने एक बैटरी दे दी, अब बैटरी की efficiency क्या बोलोगे? So you can see that this is a clicker. ये clicker है, इसके अंदर एक बैटरी लगी हुई है. How can we say that ये बैटरी efficient है या नहीं है? कभी कभार आप देखते हो कि आप अपने टीवी का रिमोट यूज कर रहे हो एंड द रिमोट स्टॉप्स वर्किंग, सो यू स्टार्ट टैपिंग ऑन इट एंड उस काम करने लग जाता है. सो आप क्या बोल सकते हो? बैटरी में चार्ज खत्म हो गया. आप ये बोलते हो बैटरी में चार्ज खत्म हो गया. तो इसका मतलब अगर हम लोग बैटरी का जो वोल्टेज है, बैटरी का जो EMF है, उसको मेजर करें एंड if the EMF is high, then I can say that it is highly efficient. अगर EMF कम होता जा रहा है यूज करते हुए, so हम बोल देंगे कि उसका efficiency कम हो गया. As obvious as that. अब रिमोट का ही एग्जाम्पल ले लीजिए. अगर मान लो ये क्लिकर यूज काम करना बंद कर दिया, I will remove the battery because it is no longer able to send electricity. So इसका EMF जो यहाँ से मुझे मिल रहा है, which can be converted into work, वो मुझे बहुत कम मिल रहा है. Okay? We give kinetic energy to the battery. Actually kinetic energy आप देते नहीं हो, वो कुछ rust and all, वो थोड़ा सा हट जाता है. Maybe that starts to make the battery more functional. लेकिन अगर kinetic energy देने से बैटरी वर्क करने लग जाता, then we would had infinite power. So हम एक कार की बैटरी लेते, उसको बस हिला देते and it would had started working. But ऐसा होता नहीं है. ठीक है. So what we talk about efficiency of a galvanic cell is that if let's say two chambers are taken और एक chamber में मैंने एक electrolyte and एक electrode रख दिया है और दोनों, you can see that इस तरह का मैंने रख दिया. So assume कर लो, let's assume that one of these electrode is magnesium. इसको मान लेते हैं ये magnesium है and this is magnesium nitrate. This is magnesium nitrate and this is copper and this is copper nitrate. Okay, now when I take magnesium and bring it in contact with magnesium 2 plus ions, there are two things which can happen. या तो magnesium Mg2 plus में convert कर सकता है, ये हो सकता है. It can also happen by giving out 2 electrons, or the reaction can go in the backward direction, or Mg2 plus takes up electron and this
can happen. If I take the other electrode, copper, then also this can happen. But how would I know that which reaction is more favorable? So I will connect it with, I'll put a voltmeter over here and complete the circuit by putting a salt bridge, and the EMF that I measure will tell me that what reaction is happening, कौन सा reaction इन दोनों में हो रहा है, whether this will undergo oxidation and this will undergo reduction, or it will be other way around. The value of EMF that I obtain will be defined as the efficiency. Okay, so the galvanic cell or voltaic cell, Amandeep will get to Gibbs free energy a little later. Okay, so a galvanic cell or cell's efficiency is measured by the ability of oxidation, OHC is oxidation half cell to lose electron, ability of reduction half cell to gain electron. Okay, so there are few questions that you are asking. How do I know the direction of reaction? So since you can see that there are two metals, Anupam, since you can see that there are two metals, what I will do is, when I complete the circuit, I start measuring the thickness of these two metals. If the thickness of a certain metal decreases, that means वहाँ oxidation हो रहा है, and if the thickness of a certain metal strip increases, तो वहाँ पे reduction हो रहा है. तो आप क्या करना है, सर्किट कंप्लीट कीजिए, जहाँ पे थिकनेस मेटल स्ट्रिप की कम होती जा रही है वो ऑक्सीडेशन होगा, जहां पे थिकनेस इंक्रीज करते जा रही है वो रिडक्शन हो जाएगा. ओके, बट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एफिशिएंसी इज कि हम देखेंगे कि कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की कोशिश कर रहा है, कौन सा ज्यादा एबिलिटी रखता है इलेक्ट्रॉन गेन करने की. ओके, सो विद दैट आइडिया इन माइंड वी डिफाइन द efficiency in terms of EMF. So the measure of the cell's efficiency is EMF, which is the voltage or the difference in the potential of two electrodes. Okay, which is the voltage, जो आपका बैटरी का voltage है वो उसका EMF है, and this EMF gives us a measure of कितना efficient आपका बैटरी है. So अगर आपकी बैटरी में से पावर कम आ रहा है, जो कि हम जनरली हम टर्म यूज करते हैं पावर, अगर पावर कम आ रहा है इसका मतलब कि बैटरी लेस एफिशिएंट होता जा रहा है. ओके, चलिए लेट्स डिफाइन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ. ईएमएफ कैसे हम डिफाइन करते हैं? ओके, सो द ईएमएफ ऑफ अ सेल मेड अप ऑफ टू हाफ सेल, हम लोग गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं. सो गैल्वेनिक सेल में वन विल बी ऑक्सीडेशन, वन विल बी रिडक्शन. इन दोनों सेल्स को मैंने मिला दिया एंड इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू. Okay, it is a constant value. The EMF of a cell is a constant value. अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखा है तो वो कांस्टेंट वैल्यू आएगा. साथ ही साथ यू हैव टू कीप द कंसंट्रेशन कांस्टेंट. सो रिमेंबर that the EMF of a cell made up of two half cells is a constant value at if pressure is constant, temperature is constant and concentration is constant. अगर इन तीनों में से कुछ भी आपने चेंज किया तो सेल का ईएमएफ चेंज करना शुरू करेगा. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये याद रखो कि ईएमएफ वैल्यूज चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन. इट चेंजेस विथ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन. इसको याद रखना है क्योंकि जब हम एक मेजरमेंट करते हैं तो हमें एक स्टैंडर्ड कंडीशन को डिफाइन करना होता है. ओके, I need to define a standard condition. Standard condition हम इस तरह से define करते हैं कि जो temperature होना चाहिए that should be 298 Kelvin, concentration should be 1 molar for the electrolyte and the pressure should be 1 atmosphere. If I make a measurement of the EMF तो ये हम इसको बोलेंगे standard EMF. EMF values measured under these conditions are known as standard EMF and it is denoted by E naught. इसको याद रख लो. Okay, it is denoted by E naught. E naught लिखा है मतलब कि temperature
298, pressure 1 and concentration is 1. In some like I think 2015 2016 में एक जेई का मेंस का क्वेश्चन आया था जहां पे उन्होंने कंसंट्रेशन was not given and they had asked something about E naught. So a lot of students thought that कि कैसे हम सॉल्व करेंगे. कुछ एक शार्प बच्चों ने क्या किया, कंसंट्रेशन को 1 मोलार लेकर सॉल्व कर दिया. ओके, सो 1 मोलार कंसंट्रेशन रहेगा अगर E naught हम मेजर कर रहे हैं तो टेम्परेचर शुड बी 298 एंड प्रेशर शुड बी 1 एटमॉस्फेयर. ओके, यस सर, आया था ना? यस, बताया ना? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बच्चे मिस कर जाते हैं, बट आप लोग मिस नहीं कीजिए क्योंकि आप पढ़ रहे हो. ठीक है. नाउ हम ईएमएफ मेजर कैसे करते हैं? ईएमएफ मेजर करने का तरीका क्या है? हाउ डू वी मेजर द ईएमएफ? सो ईएमएफ मेजर करने के बहुत तरीके हैं. One is using Nernst equation. I'll get to Nernst equation a little later. लेकिन सबसे easy तरीका है कि which is measured as the sum of potential of cathode and anode. So I have an electrode. उसका मैं एक potential measure करता हूँ और anode का potential और उन दोनों को add कर देता हूँ. Now Ajay has written an equation. Now I will tell you कि इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं. Just don't follow exactly that one. Okay? अजय उसको exactly उसको follow नहीं करने की जरूरत है. Now अगर हमने 2 हाफ सेल लिया, फॉर एग्जाम्पल जो सिंपल वोल्टाइक सेल जो एलेसैंड्रो वोल्टा ने बनाया था, इट वॉज जिंक ड्रॉप डिप्ड इन जिंक सल्फेट, कॉपर डिप्ड इन कॉपर सल्फेट. इफ आई टेक दैट, तो जिंक सल्फेट का जो पोटेंशियल है दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन हाफ सेल पोटेंशियल, और इट इज नोन एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और हाफ सेल पोटेंशियल. कॉपर का भी उसको हम हाफ सेल पोटेंशियल ही लिखेंगे. प्लीज डोंट एवर से दैट द हाफ सेल पोटेंशियल इज द सेल पोटेंशियल. अभी उस पर हम आए नहीं है, बट फॉर नाउ रिमेंबर दैट कि जो हाफ सेल होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उनको हम हाफ सेल पोटेंशियल्स या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखते हैं. ओके, नाउ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल measures the tendency of an electrode to get oxidized or reduced. Okay, it measures the tendency to obtain electrons or to gain electrons. So obtain electrons or give out electrons, obtain electrons and give out electrons. ठीक है. हाफ सेल का मतलब ये है जो जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल. हाफ का मतलब क्या होगा? आधा कर दिया आपने. सो यू टेक अ कंप्लीट सेल जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल. जहां रिडक्शन हो रहा है उसको रिडक्शन हाफ सेल बोलते हैं. नाउ इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ हाफ सेल. इसको याद रखो. मान लो कि आपने एक मैग्नीशियम का स्ट्रिप मैग्नीशियम नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाला है. अज्यूम कर लो. ओके, लेट्स अज्यूम दिस. अज्यूम दैट यू हैव अ स्ट्रिप ऑफ मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम के में आपने डाल दिया. आई वॉन्ट टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. आई वॉन्ट टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. मैग्नीशियम का मैग्नीशियम 2+ में चेंज होने में क्या पोटेंशियल जनरेट हो रहा है? हाउ डू आई मेजर दैट? व्हाट आई डू इज, मैं एक क्या करता हूं कि इसके साथ एक वोल्ट मीटर लगा देता हूं. एक वोल्ट मीटर मैं यहां पे लगा देता हूं, बट वोल्ट मीटर के साथ एक इलेक्ट्रोड लगा रहेगा, तो इट विल गिव द पोटेंशियल बिटवीन दिस इलेक्ट्रोड and magnesium. It will not give exclusively for magnesium. Okay, it will not give exclusively for magnesium. So if it is not giving exclusively for magnesium, it is impossible to measure the electrode potential for a electrode. अगर आपने एक इलेक्ट्रोड लिया, उसको किसी के साथ कंबाइन नहीं किया, you are observing oxidation taking place. ऑक्सीडेशन को जब तक रिडक्शन के साथ कंबाइन नहीं करोगे ईएमएफ मेजर नहीं कर सकते हो. ओके, यू कांट डू दैट. सो इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ हाफ सेल. हाउ डू वी मेजर इट? इसको तब मेजर करते कैसे हैं? इट इज मेजर्ड बाय कपलिंग इट विथ अ हाफ सेल हुज पोटेंशियल इज आर्बिट्ररली टेकन एज 0. ओके, मान लो कि मुझे आपका
एकेडमिक परफॉर्मेंस चेक करना है. हाउ वुड आई चेक योर एकेडमिक परफॉर्मेंस? हाउ वुड आई चेक योर एकेडमिक परफॉर्मेंस? अगर मुझे जानना है कि वेदर समबडी, शिव और उदय, हाउ गुड आर यू एट स्टडीज, कैसे हम चेक करेंगे, कैसे चेक किया जाता है? तो आई विल गिव यू अ क्वेश्चन पेपर. अब क्वेश्चन पेपर जब मैंने आपको दिया तो क्वेश्चन पेपर में एक सर्टेन मार्क्स भी लिखा रहेगा. 100 लेट्स से 100 मार्क्स का पेपर है. सो somebody who gets 100 he would become the best in the class. 100 के रेस्पेक्ट में जो भी जितना कम ला रहा है उसकी रैंकिंग में उस तरह से कर दूंगा. तो 100 को अगर मैं रेफरेंस मान लूं then I can always decide 100 is the best student. 100 एक रेफरेंस मैंने ले लिया. I can always take with reference to 100 marks कि कौन कितने पानी में है. Okay? How good a certain student is. So I can always measure EMF. Remember that EMF is of a cell is measured as the sum of potentials of cathode and anode. So cathode और एनोड के पोटेंशियल का सम लेके हम EMF निकालते हैं पूरे सेल का. If one of them is taken as 0, let's say this is given as E naught cell and this is given as E naught of cathode and this is given as E naught of anode. If I take one of them as 0, what will happen? अगर मैं इसको 0 ले लेता हूं, इसको 0 ले लेता हूं, then E cell will be nothing but the electrode potential of cathode. Isn't it? Is that understood? E cell will be nothing but electrode potential of the cathode. अगर मैंने दोनों को कंबाइन करके एक सेल बनाया and one of them is arbitrarily chosen as 0, so E cell will be nothing but E naught of cathode. अब हम 0 किसको ले? Okay? Who should I take as 0? Let's get to that. So what? ये जो 0 जिसको लिया जा रहा है उसको बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड. और रेफरेंस का मतलब क्या है? ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंस? रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है? सो एज्यूम कर लेते हैं कि आई हैव टू मेजर द हाइट ऑफ 3 people who are walking towards a certain point. Okay, what is the 3 people who are walking towards a certain point. मुझे इन तीनों का हाइट मेजर करना है. सो मैं क्या करूंगा? What is the method of measuring the height? I will put them against a wall और ऊपर से नीचे तक मैं देख लूंगा हेड टू टो कितनी उनकी लंबाई है, मैं मेजर कर लूंगा. बट लेट्स से दे आर वॉकिंग समवेयर जहां पे ग्रास है. ओके, दे आर वॉकिंग समवेयर वेयर देयर इज अ ग्रास. सो अगर ग्रास है तो मैं क्या करता हूं कि मैं एक पोल को फिक्स कर लेता हूं. ओके, आई टेक अ पोस्ट. एक पोल रखा हुआ है, मैं पोस्ट को देख लेता हूं. नाउ इस पोस्ट के रेस्पेक्ट में मैं देख रहा हूं कि इस बंदे की हाइट थोड़ी ज्यादा है, इस बंदे की हाइट काफी कम है, एंड दिस गाय इज लाइक इन द मिडल ऑफ बोथ ऑफ देम. ओके, सो व्हाट आई डू इज आई कंपेयर. इफ आई डू अ कंपैरिजन with respect to this post, if I do a comparison with respect to this post, can't I say that I can get a result like this? Okay, can't I say that I can get a result like this? मान लेते हैं कि this is person A, this is person B, and this is person C. Okay, this is person A and this is person B and this is person C. So person A height is -60 centimeter with relative to the post. This is the post. Okay, this is the post. So I can say that अगर मुझे तीनों की हाइट मेजर करनी है तो इस पोस्ट के रेस्पेक्ट में इसकी जो हाइट है वो -60 इस तरफ है, नीचे की तरफ. ओके, हाइट कम है उसके रेस्पेक्ट में. B height is 40 centimeters higher than the post. Okay, 40 centimeters higher than the post. And C की हाइट क्या है? 20 centimeters shorter than the post. Now दो तरीके हैं मेजर करने के. I can measure their absolute height. So let's say their toe is somewhere over here,
तो मैं इसको एब्सोल्यूट हाइट भी मेजर कर सकता हूं. ओके, आई कैन मेजर दैट एब्सोल्यूट हाइट, बट मुझे टो दिख नहीं रहा है, तो आई डोंट पुट एन एफर्ट इन मेजरिंग द एब्सोल्यूट हाइट. आई मेजर इट विथ रेस्पेक्ट टू दिस पोस्ट. इज दैट क्लियर? सबको समझ में आया कि मैंने क्यों ये पोस्ट लिया? बिकॉज एब्सोल्यूट हाइट मुझे मिल नहीं रहा है. ओके, आई एम नॉट गेटिंग द एब्सोल्यूट हाइट, तो पोस्ट के रेस्पेक्ट में मैंने ये मेजर कर दिया. क्लियर? नाउ अगर मैं एब्सोल्यूट हाइट मेजर करता, हैड आई मेजर्ड एब्सोल्यूट हाइट, तो क्या आता? B would had come taller than C, who had taller than A. ये इनका हाइट का ऑर्डर रहता. Isn't it? अगर if I would had measured their absolute heights, I would have gotten this result. Isn't it? But if I measure it with respect to the post, then I can say that with respect to the post, if this guy is at plus 40, then B is taller, and this is at minus 60, this is minus 20. तो ये B, C, A, again using this idea also I am getting the same result. Okay, using this idea also I am getting the same result. So should I be worried about measuring the absolute values? बताइए. Should I ever be worried about measuring the absolute values? अगर मैं ये बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मेजर किया जा सकता है, I should not be worried about that. What I should be doing, rather I should create a reference, and with respect to the reference I can measure everything. Okay, with respect to the reference I can measure everything. So I hope this is clear. This reference electrode का जो concept है, it is clear. So what do we choose as a reference electrode? Reference हमको क्या लेना चाहिए? We take reference as standard hydrogen electrode. बहुत सारे तरह के reference electrode आते हैं. कैलमल इलेक्ट्रोड आता है, निकल इलेक्ट्रोड आता है, निकल कैडमियम इलेक्ट्रोड आता है. बट द मोस्ट कॉमन वन इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. यू कैन सी दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. इन अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन गैस इज इंट्रोड्यूस्ड. हाइड्रोजन गैस हम इधर से लाते हैं, एंड दिस सोल्यूशन इज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, दिस is of hydrochloric acid. Now this is a surface over where a reaction takes place. Reaction ये हो सकता है. Reaction can be this: hydrogen can undergo oxidation to give out electron. Either ये reaction हो सकता है. Reference must be greater compulsory. Reference can be anything, man. रेफरेंस ग्रेटर स्मॉलर का कोई फर्क नहीं पड़ता है. रेफरेंस के रेस्पेक्ट में आप कुछ भी ले सकते हो. ओके, सो आइदर दिस रिएक्शन कैन हैपन ओवर हियर. दिस इज अ सरफेस ऑन विच अ सर्टेन रिएक्शन विल टेक प्लेस. ओके, अबाउट दिस सरफेस अ सर्टेन रिएक्शन विल टेक प्लेस. सो आइदर दिस रिएक्शन कैन ऑकर half H2 gas, this can happen, और ये रिएक्शन हो सकता है H plus I can have this reaction. Okay, I can have any one of these two reactions. Now it is arbitrarily assumed. What is this reaction? What is this reaction? Oxidation. What is this reaction? Reduction. Okay, what is this reaction? Oxidation. What is this reaction? Reduction. Clear? What is this reaction? Oxidation. This is reduction. अगर ये oxidation है तो इसको हम लिख सकते हैं E naught oxidation. If the measurement is done, अब देखिए गैस का प्रेशर क्या है? 1 atmosphere. Solution का concentration क्या है? 1 molar. And if temperature is 298 Kelvin, then whatever value of potential that I measure is E naught of oxidation. For this reaction I will measure E naught of reduction. Okay, the reaction can be any one of these. कुछ भी एक reaction हो सकता है. Okay,
It's not y reverse. It मैं अगर reduction लिख रहा हूँ then I can also write oxidation reaction. So oxidation के लिए हम लोग arbitrarily I will take the value as 0 volt. So reduction के लिए भी जो value हो जाती है वो 0 volt होती है. Okay, the arbitrary value of this half cell's potential is taken as 0 volt. ठीक है? Is this clear? तो अगर हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया है तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड चाहे वेदर इट वर्क्स एज अ कैथोड और वेदर इट वर्क्स एज अ एनोड, उसका पोटेंशियल हम 0 ले लेंगे. ओके, इफ सॉल्यूशंस कंसंट्रेशन इज 1 मोलार, हाइड्रोजन्स गैस प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर इज 298 केल्विन. ओके, सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर. अब हम किसी और इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे मेजर करेंगे? कैन यू टेल मी हाउ वुड आई मेजर द पोटेंशियल ऑफ सम अदर इलेक्ट्रोड? व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक द इलेक्ट्रोड हुज पोटेंशियल नीड्स टू बी मेजर्ड. जैसे कि हम मान लेते हैं कॉपर का पोटेंशियल मुझे मेजर करना है. सो कॉपर का पोटेंशियल मेजर करने के लिए मैंने कॉपर इलेक्ट्रोड लिया एंड कॉपर इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. ओके, और अ सॉल्यूशन ऑफ Cu2+. ओके, copper sulfate, I take metal which is copper and it is dipped into a solution which is of Cu2+ ion. उसका concentration 1 molar रखते हैं. This is our standard hydrogen electrode. Okay, this is our standard hydrogen electrode. Now I will get a value of potential. यहाँ पे एक E0 का एक value आएगा. Let's say the value comes as to be x volts. Okay, let's say the value comes as to be x volts. So how would I write the outcome? E0 of cell is equal to E0 of a standard hydrogen electrode plus E0 of copper electrode. Okay, E0 of cell will be written as the sum of these two. Sum of these two. Now इसको अगर हम 0 बोल देते हैं and this value is x, then E0 of copper becomes x. Okay, is that clear? Now it is important to know कि whether this is undergoing oxidation or reduction. Okay, so how would I know that it is undergoing oxidation or reduction? अभी तो मुझे मालूम, मैंने तो ये नहीं लिखा ना, I have not written कि this is undergoing oxidation, this is undergoing reduction, or it is the other way around. How would I do that? I will measure the thickness. Okay, measure the thickness. So if the thickness decreases, that means what is happening? Oxidation of this electrode is happening, and whatever I have measured is the oxidation potential for copper. Is that understood? Whatever I am measuring is involving oxidation of copper. If the thickness is increasing, then the value that I measure is nothing but the reduction potential. So remember, for any metal electrode you can have two values. You can have a value of E0 of oxidation. You can also have a value of E0 of reduction. दो values आप लिख सकते हो. Okay, when you write these two values, E0 of oxidation would be written, or this will become E0 of oxidation if thickness increases. E0 of oxidation will become equal to E cell, E0 of cell, thickness decreases. Okay, thickness decreases, and E cell will become E0 of reduction if thickness increases. Okay, voltmeter, yeah, it will measure. Okay, that's correct. Whatever you are saying, Shiv, it's correct. So E0 of the cell will be measuring E0 oxidation,
if the thickness of the metal strip is decreasing. E naught of the cell is measuring E naught of reduction if the thickness is increasing. Okay, so if I do this assessment, अब देखिए ये this is known as standard electrode potential. Okay, this is known as standard electrode potential. Now आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन इज समवेयर ओवर हियर, हाइड्रोजन इज समवेयर ओवर हियर, ठीक है। अगर आप हाइड्रोजन को लेके उसके रेफरेंस में बाकी सारे सब्सटेंसेस का पोटेंशियल्स मेजर कर रहे हैं, then you are getting some values which are positive and some values which are negative. Okay, you can see that these values that you are getting is positive, some values that you are getting is negative. What is the meaning of this? इसको हम समझते हैं अच्छी तरह से. If what is the reaction that you can see over here? ये reaction क्या हो रहा है? Can you tell me what is this reaction? ये reaction क्या हो रहा है? What is this reaction? Is this reaction oxidation or is this reaction reduction? क्या reaction आपको दिख रहा है? Is this reaction oxidation or is this reaction reduction? So ये हो, is this oxidation or reduction? It is reduction. It is reduction. Okay? It is reduction. So what are these potentials measuring? Ability to get reduced. Okay, what are we measuring? Ability to get reduced. अगर ये reduction reactions हैं, then what are we measuring? Ability to get reduced. Okay, so if we are measuring ability to get reduced, तो जिनका पॉजिटिव वैल्यूज आ रहा है, दे हैव मोर एबिलिटी देन हाइड्रोजन टू गेट रिड्यूस्ड. We can say H plus to get reduced. They have more ability than H plus to get reduced. और जिनका नेगेटिव आ रहा है, they have less ability than H plus to get reduced. Now, how do I say or why I am saying that it is having less ability or more ability is because delta G, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, delta G is proportional to minus of E naught. Delta G is proportional to minus of E naught. Okay, so do you know this part that delta G if is negative, delta G if is negative, it means feasible. Delta G if is positive, अगर ये negative रहा तो ये हम बोलेंगे feasible. Okay, let me write it with a different color. So if it is negative, it means feasible. Okay, if it is negative it is feasible. अगर ये positive होगा तो क्या होगा? Non feasible. Feasible means can take place on its own, अपने से हो सकता है. Okay, it's on its own. So आप देख रहे हैं सारे रिडक्शन रिएक्शंस हैं. For all reduction reactions, I am measuring certain values of potentials, and ये values क्या दिखा रहे हैं? Ability to get reduced. They are telling ability to get reduced. Now, if we have a positive value, if we have a positive value, then for everything which has a positive value, delta G negative हो जाएगा. For everything which has a positive value, delta G will be negative. For everything which has a negative value, delta G will be positive. इसका मतलब कि अगर मैंने हाइड्रोजन और फ्लोरीन का एक सेल बनाया, हाइड्रोजन कंबाइंड विथ फ्लोरीन,
एक सेल बनाया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड फ्लोरीन देख एक सेल बनाया है, देन फ्लोरीन विल गेट रिड्यूस्ड, हाइड्रोजन विल गेट ऑक्सीडाइज्ड. ओके, ट्राई एंड अंडरस्टैंड अगेन. ओके, ये थर्ड टाइम एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड अगेन. दिस you can see a lot of values over here. Okay, you can see a lot of value. Remember to look for this one. क्या reaction यहाँ पे हो रहा है? What is the reaction which is happening? The reaction is reduction. The reaction is reduction. This value is of potential. Values which are positive and there are certain values which are negative. Okay? Some values which are positive, some values which are negative. What are we measuring over here? Ability to get reduced. We are measuring the ability to get reduced. Okay? We are measuring the ability to get reduced. Now, the ability is defined using delta G, which is proportional to minus of E naught. Delta G, which is proportional to minus of E naught. Now, you know that delta G agar negative hai, that means it is feasible. Feasible means it can take place on its own. For example, पानी का पहाड़ के ऊपर से गिरना. That's a feasible process. For that, delta G is negative. Evaporation takes place on its own. Delta G उसके लिए negative होगी. Okay? By itself. If delta G is positive, non-feasible, it will be खुद से नहीं होगा. You have to push it. For example, किसी ने मुझे पढ़ाई करनी है. So I have to be, उसके लिए मुझे push करना पड़ता है. Okay? A lot of people will have to push me. If I have to go out and play a certain game, मेरे को वीडियो गेम खेलना है, so मेरे को उतने एफर्ट नहीं चाहिए. I can like get involved in the game on my own. So if it is getting involved on its own, it is feasible. If it has to be pushed, if उसके पीछे काम करना पड़ेगा, it is non-feasible. So can I say that जिनका भी positive values है, for all of these, we would be getting delta G which is negative. Can I say this? And all of these which have, I will get delta G as positive. Okay? Clear? Now, इसका मतलब ये हो गया कि with respect to hydrogen, they will get reduced faster. With respect to hydrogen, these things would not want to get reduced. If they do not want to get reduced, जो जिनका ये negative are the ones for which standard potential is negative, what is the likely reaction that will take place? कौन सा reaction वो करना चाहेंगे? ये reaction reduction feasible नहीं है, तो कौन सा reaction वो करना चाहेंगे? बताइए. What is the reaction that they would want to do? Lithium, magnesium, aluminium, what is the reaction that they would want to do? They would want to do a reaction which will go in the backward direction. That means they would want to do a reaction which is oxidation. You can see that reduction is not feasible, so they would want to undergo oxidation. So इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि stronger oxidizing agent. What is the meaning of oxidizing agent? Something which undergoes self reduction. What is an oxidizing agent? Oxidizing agent पहले बताया हमने. Oxidizing agent undergoes reduction. What is a reducing agent? Something which undergoes oxidation. So जिनका यहाँ पे आप negative value देख रहे हो for potential, they would want to undergo oxidation and reduce something else, and these would want to undergo reduction and oxidize something else. Okay? I hope this is clear. Please do rewatch the videos to understand this in a detail. E naught को calculation करने के लिए we use certain equations. So remember this, to calculate this, how do we do that? Somebody asked, so I will write something like this. E naught of cell can be written as
E naught of oxidation plus E naught of reduction. I will write it like this. Okay? E naught of oxidation. Now oxidation कहाँ पे होता है? Where oxidation takes place? Anode. Where reduction takes place? I will write cathode. Oxidation takes place at anode, reduction takes place at cathode. So can I say that it will be E naught of anode plus E naught of cathode? Okay, plus होगा. Remember, it will be plus. Now anode oxidation करता है, cathode will undergo reduction. So यहाँ पे जो potential हम measure कर रहे हैं, what is this potential? Oxidation potential. And what is this potential? Reduction potential. Look very carefully. This is oxidation, this is reduction. Add कर दो. Okay, please add them. Add oxidation potential to reduction potential. Now suppose you want to convert both of them in reduction potential. If you want to convert both of them, you want to use reduction potential, then what you will do is you will take the negative of anode and add it to the positive of cathode if you are using reduction potentials. Okay, if you want to use reduction potential, दोनों को same units reduction potential लेके measure करना, तो ये minus anode होगा plus cathode होगा. If you want to use oxidation potential, अगर आपको oxidation potential values सिर्फ दी गई हैं, then how would you measure? You will take जिसका oxidation किसका होता है, anode, उसको positive लेंगे and कैथोड के लिए नेगेटिव ले लेंगे. सो ये जो इक्वेशन है ये हम आराम से ले सकते हैं. वी कैन टेक दिस इक्वेशन, बट ऑलवेज ट्राई टू यूज दिस वन. ऑलवेज ट्राई टू यूज दिस वन. ठीक है? एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे, बट आई टेक अ वेरी सिंपल वन. एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं. मान लो कि आपको दिया गया है जिंक 2+ takes up 2 electron, changes to zinc, और ये वैल्यू दी गई है E naught. E naught value is given as X volts. Cu2 plus 2 electrons, copper, E naught value is given as Y volts. Okay? This is anode and this is cathode. इन अ गैल्वेनिक सेल हमने बनाया था, वहां पे ये दोनों एनोड एंड कैथोड. सो हाउ वुड आई राइट द आउटकम? व्हाट विल बी द ईएमएफ? ईएमएफ कैसे लिखेंगे? एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेते हैं. एनोड के लिए हमने क्या लिखा है? रिडक्शन रिएक्शन. व्हाट हैव आई रिटन? एनोड के लिए हमने रिडक्शन रिएक्शन लिखा है. तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब हम लिखेंगे तो ये एक्स की वैल्यू, ये एक्स लिखने की जगह आई विल राइट इट एज, I will write for anode I will write minus X, and for cathode I will write plus Y. Okay? Anode will be written as minus X, it will be written as plus Y. Clear? Minus X plus Y. Now if I want to use reduction potential, what is given? Reduction potentials. I want to use only reduction potentials. Then अब देख लो, reduction potential for cathode is given as Y. If I want to use only reduction potential, what is the method? I will take the negative of what is given for anode, so minus X plus Y. So either you invert this and turn it into minus, or you take this formula or you take this formula. My favorite is this, because I will change this to oxidation and change this to minus and add both of them. Okay, so we will do problems on this in the next class, and this is the first part of
Nernst equation. Next class में पढ़ेंगे कि why do we have to use Nernst equation. The next session will be on differentiation, so please stay for that. And I hope you enjoyed today's session, so please don't forget to like, share and subscribe our channel, because that's all the more that pushes us to do all the best that we can for you guys. Okay, so this is Sourav Goswami. I will take the leave today and we'll meet on Monday with a brand new session on Nernst equation. Please do come with a pen and a paper. We will solve a lot of questions. Bye bye guys, and have a lovely time.